I have started a YouTube channel named UPSC, CSC, IAS, Aspirant. Okay, this is our YouTube channel. What we will do? We will thoroughly cover all the GS subjects here. Okay, all the GS subjects, CSET paper, optional paper. Optional we will uh, do PSIR or sociology in between anyone. Okay, so before going further, first discuss the exam pattern of UPSC CSE. Exam pattern of UPSC CSE. UPSC CSE is a three-stage exam. First name is preliminary, commonly known as prelims. Second name is main, and third as personality test, commonly known as interview test. Okay. Prelims we have two paper. First GS1 and second GS2. GS2 is commonly known as CSET. Okay. This is qualifying in nature. 33%. Actually, those who passed GS1 will selected for mains, but CSET must be qualified. Okay. Here, 100 questions came, each of 2 marks and my and 1 by 3 negative marking. That means total paper is of 200 marks. You will get 2 hours to complete your paper. Okay. Here, CSET is generally qualifying. Here, 80 questions came, each of 2.5 marks and minus 1 by 3 negative marking. Okay. That means here also paper is of 200 marks and you will get same 2 hours here also to complete your paper. Okay. Now we have to go to mains. Main. Here you will get 4 components: language paper, language, second essay, third GS, and fourth optional. Okay, you have to choose 2 languages and here you have to give paper. This is also qualifying in nature, 25%. All the exam here I will told you will be of 3 hours and 250 marks. Only the language papers is of 300 marks. Okay, language papers is only of 300 marks. Essay, same 250 marks. You have to write 2 essays
each of 125 marks, each of 125 marks. Now, furthermore to GS, here we got 4 GS subjects: GS1, GS2, GS3, and GS4. GS4 is ethics, integrity, and aptitude. Okay, so all the paper is of 250 marks. 250 marks, 3 hours each. Okay, no option A. You have to give. You have to select one option, and here you will do have to give two paper, paper one and paper two. Okay, same 250 marks and 3 hours. So your optional is of 500 marks. Your GS is of 1000 marks. Your essay is of 250 marks, and language paper is your only qualified. Language paper marks are not added in your final merit. Okay, this is for qualifying, and preliminary exam is for screening test only. Okay. Now you have to give your personality test, which we commonly known as interview, is of 275 marks. Okay, so if you calculate all the things, that means it will be 1750 marks of means, 1000 marks GS, 500 marks optional, 1500, and plus 250 marks essay, 1750, and plus 275 marks interview. That means 2025 marks. And out of 2025, if you score 1025 plus, 1025 should be your target. If you score 1025 plus, that means you are going to become IAS from general category. Okay, now we will start. I will give more information about the examination later between in the period of preparation. So, how we will start? We will start with NCRT foundations. NCRT foundation. NCRT foundation. NCRT is of we can mm, we can divide NCRT in two parts. First, sixth class 6 to 10th, and second class 11, 10, 12th. Okay, what we will do? We will cover each and every chapter from class 6 to class 10th and then 11, 12th. No, जो टॉपिक आपका क्लास 6 में है, ठीक है, वो आपकी क्लास 11th में भी आएगा. समझ रहे बात? जैसे मैं आपको हिस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ. हिस्ट्री जो आपका क्लास 6 का अपना एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसका नाम है अवर पास्ट 1. क्लास 7 उठाएंगे तो अवर पास्ट 2. क्लास 8 उठाएंगे तो अवर पास्ट 3. 9th और 10th है इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड 1 एंड 2. ठीक. क्लास 11th है आपका न्यू एनसीईआरटी में बता रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री. एंड क्लास 12th में तीन आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3. तो एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न का है. तो क्लास 6 आप उठाओगे तो आपको एंशियंट मिल जाएगा. क्लास 7 उठाओगे तो आपको मेडिवल मिल जाएगा. क्लास 8 उठाओगे तो आपको मॉडर्न मिल जाएगा. ओके. क्लास 9 10th उठाओगे तो इंडियन कंटेम्परेरी वर्ल्ड. तो लगभग मान सकते हो आपकी क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है. क्लास 11 आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिल जाएगा और क्लास 12 में आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही मिल जाएंगे. ठीक है. तो ये हिस्ट्री का आपका है. तो मैं ये आपको बात समझाना चाह रहा था कि जो क्लास 6 का एंशियंट है वो क्लास
ट्वेल्थ का जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी वो चीजें होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स है हम यहाँ से उठाएंगे, क्लास 11th 12th के एनसीईआरटी से, क्लास 11th 12th के एनसीईआरटी से क्या करेंगे, टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन उसको पढ़ाएंगे किस लेवल से, हम सिक्स लेवल से उसको लेकर चलेंगे। लेकिन हम क्या, हम क्लास 11 12 की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं तो नहीं, हम क्लास 11 12 की पूरी एनसीईआरटी नहीं कवर करने वाले हैं। हम सिर्फ अपना फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं इस फेज में, ये इसका नाम ही है फाउंडेशन फेज। ओके, तो हम सिर्फ इसमें क्या काम करने वाले हैं कि अपना हम एनसीईआरटी उठाएंगे और उसको क्लास 6 के लेवल से 11th के लेवल तक उस टॉपिक को हम बढ़िया से समझ लेंगे, ताकि आगे जब हम उसको मेन, जब हम अपना टोटल जब बढ़िया से जीएस को पढ़ेंगे तो हमको वो टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो, हमारा फाउंडेशन पहले से बना हुआ हो। ठीक है, so what we will do, we will start with four core GS subjects, four core GS subjects, four core GS subjects को कहते हैं। 60 to 70% weightage is of only these four GS subjects. First, geography. Second, history. Third, economy. And fourth, polity. These are your four core GS subjects. We will start with geography, then move to history, and then economy, and then polity. Okay. So let's start with geography. Now we will start with geography. Okay. The term geography. One second. Term geography is itself derived from two Latin words. First, geo, and second, graphos. Geo means earth, and graphos means study, description. What we can say about the definition of geography? The study of earth is known as geography, or we can say that systematic study of earth is known as geography. But it is complete? No, it is incomplete. We the humans make change here in earth day every day. We exploit we exploit resources, coal, mining, drilling. Many major construction activities are going forward. So only study of earth is geography? No. Study, systematic study of earth. Systematic study of earth and how humans live, work, and operate on earth. This will be the actual definition of geography. Who is the father of geography? Eratosthenes is the father of geography. Eratosthenes is the student of Aristotle. Describe the geography as home of man. Okay, he is Aristotle. Sorry, he is Eratosthenes, student of Aristotle, father of known as father of geography. Described geography as home of man. Geography described from two Latin words. First is geo and second is graphos. Geo means earth and graphos means study. After description, we can say that study or description of earth is known as geography. No. System, or we can say that systematic study of earth is known as geography. No. This is incomplete because we are the humans who make differences every day on earth. We do mining, drilling, exploitation of
Earth's mineral resources, natural resources, clearing forest. Okay, so we will not go deep into this. So we can say systematic study of Earth and how humans live, work, and operate on Earth, or relationship between environment and human beings. Okay, so the systematic study of Earth and its relationship with human beings. Okay, this is all about geography. Now we will move further. There are four realms of geography. Four realms of geography. First, land. Second, air. Third, water. And fourth, life. Okay, land, air, water, and life. Okay, in geography, we describe land as lithosphere. Lithosphere. Lith means rock. Lith means rock. Okay, we describe air as atmosphere. We describe air in atmosphere. Sorry, water in hydrosphere. Hydrosphere and life in biosphere. Where all three land, air, water will combine, there will be life. Okay, so land, air, water. Here you can see that here you can say that here is there is land, air, and water. That's why there is life on. Okay, four realms of Earth. First, lithosphere. Okay, landforms, rocks, atmosphere, gaseous envelope, air, hydrosphere, water component, ocean, rivers, lake, biosphere, life zone, flora and fauna, plants, animals, humans. Okay, there if we have to divide geography as a whole subject, then we can divide it into physical geography and human geography. Okay, what is physical geography? Study of Earth in its natural state is known as physical geography. Okay, the science behind physical features and processes. We can know about how mountains are formed. Okay, this how tides come, uh, how ocean currents flow. This we will study in geography. How clouds form, how will rain form. So this we will study in physical geography. What is human geography? Impact of human activities on environment. This is human geography. How humans live, work, and operate on geography. Didn't study physical geography and human geography in isolate. Geography study the interaction of physical geography and human geography. Geography studies the relationship between these two worlds. Okay. Now, we will start with physical geography. Physical geography. 1 second. Physical geography. Okay. What is physical geography? Tell me in the comment section. What is physical geography? Okay. There are four components of physical geography. First is geomorphology. Geomorphology. Here we will study about the landforms,
Second is climatology. Third is hydrology. Sorry. Oceanography. Oceano, Oceanography. And fourth is biogeography. Biogeography. Okay. Branches of physical geography. Geomorphology. Here we study about landforms, their origin, development, and changes over time. Oceanography. Study of water bodies, currents, tides, and marine systems. Climatology. Focus on atmosphere weather patterns. Atmosphere and weather patterns. Biogeography. Distribution of flora and fauna. Okay. So we will start with interior of the earth. We will start with interior of earth. Before we going to start, we first need to know why do we need to know about इंटीरियर ऑफ द अर्थ. धरती के नीचे क्या हो रहा है उसको हमें जानने की क्या जरूरत है. हम तो धरती के ऊपर रह रहे हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फिर क्या मतलब है धरती के नीचे के पास जाने का. रिसोर्स एक्सप्लोरेशन फर्स्ट पार्ट. रिसोर्स exploration. What is resource exploration? What you drink? Fresh water. Where will be fresh water found? This will depend on the interior of the earth. Fossil fuels. Fossil fuels. So that's why we need to know about the interior of the earth to look at for resource exploration. Okay. And second, to know about geophysical phenomena. Geophysical phenomena will be now a common word for you. What is geophysical phenomena? Earthquake, volcanic activity, volcanic activity, etc. This will come in your geophysical phenomena. To know about interior of the earth, that's why we need to know about the interior of the earth. Okay. Once again. How can we know about the interior of the earth? How can we know about interior of the earth? For this, we have to go to the sources. We need to know about the sources. There are two type of sources for to know about interior of the earth. First, direct, and second, indirect sources. Okay, so we will study first about the direct sources, and then we will move towards indirect sources. Okay, direct sources. Direct sources. So first direct source we will study about mining and
ड्रिलिंग। आपने केजीएफ मूवी देखी है? केजीएफ, दिस केजीएफ फुल फॉर्म इज कोलार गोल्ड फील्ड। ये गोल्ड की माइन माइन थी। यहाँ पे हमने 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर नीचे जाकर हमने क्या किया है, माइनिंग किया है। अब ये माइन वैसे बंद हो चुकी है। ओके। साउथ अफ्रीका में एक गोल्ड फील्ड है, साउथ अफ्रीका गोल्ड फील्ड। यहाँ हमने 4 किलोमीटर तक माइनिंग की है। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। यहाँ पे भी अब काम रुक चुका है। ठीक। और तीसरा, आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में हमने 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग की है। 12 किलोमीटर। लेकिन क्या इसके नीचे हमने सोचा कि नहीं अब हो गया, अब इसके नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं? नहीं, इसके नीचे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो काम करना बंद कर दिया। इसके नीचे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो काम करना बंद कर दिया। इसका जो मेन रीजन था वो था, वैसे तो ये इनडायरेक्ट सोर्स पे आ जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। What pressure and temperature did? So I need to explain with you a concept of class type. Okay, 1 second. Okay, suppose this is 1 second, 1 second. Suppose this is solid. What we will see here, here your particles will be closely packed. In solid, what happened? Your particles are closely packed. Where in contrast with liquid, your particles are not closely packed in comparison with, अगर आप सॉलिड से कंपेयर करोगे तो आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो उतनी क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड, अगर सॉलिड को हमें लिक्विड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है सॉलिड क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। अगर आइस को आप बॉईल करोगे तो आइस क्या हो जाएगा? आपका वाटर हो जाएगा। उसको और ज्यादा बॉईल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वेपर हो जाएगा। ओके। अच्छा, तो एक बात आपको और मैं बताता हूँ, हर 32 मीटर अगर हम धरती के नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर एवरी 32 meters we go deep inside the earth, 1 degree Celsius temperature will increase. Okay. What is the depth of the earth? 6,371 kilometers. 6,371 kilometers is the actual depth of the earth. Okay. One more thing. So that means our bedrock of the, that I don't go deep inside in this in the stage now, but I think we have to go. Yeah.
एक मिनट. This is core, mantle, and crust. That means because there is that much temperature every 32 after every 32 meter 1 degree Celsius temperature increase. That means the core mantle of our Earth will be of liquid. Why not? Due to pressure. What happened? When we go deep inside the Earth, suppose you have taken a rock on your head. मान लीजिए कि आपने एक अपने सिर पे पत्थर रखा है, तो उसका आप पर प्रेशर पड़ेगा. इस पत्थर का भी कुछ वेट होगा जो आप पर प्रेशर लगाएगा. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके. इसके नीचे वाला जो पत्थर है उस पर ये भी पत्थर फोर्स लगाएगा और ये भी पत्थर अपना फोर्स लगाएगा. तो उसी तरह आप सोचिए जो सबसे नीचे वाला जो रॉक होगा, सबसे नीचे वाला जो रॉक होगा, सपोज करिए, तो उस पे इस पत्थर का भी प्रेशर होगा, इस पत्थर का भी प्रेशर होगा, इस पत्थर का भी प्रेशर होगा, इस पत्थर का भी प्रेशर होगा. तो उसमें उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर. और बेड रॉक्स आर सॉलिड. बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, हमारे बेड रॉक्स है वो सॉलिड. टेम्परेचर से अगर अधिक प्रेशर है तो हमारे रॉक्स क्या होंगे, सॉलिड हो जाएंगे. और वही टेम्परेचर से अगर कम प्रेशर है तो लिक्विड हो जाएंगे. समझ में आया? अंडरस्टैंड? अगर प्रेशर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर क्या करेगा, सॉलिडिफाई करेगा. वही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, लिक्विडिफाई करेगा. ओके. सो ये एक रीजन था कि हम डीप इनसाइड द अर्थ उतना नहीं जाता. सेकंड जो रीजन है वो आपका वोल्केनिक एक्टिविटी. वोल्केनिक एक्टिविटी. नाउ आप कह सकते हो यार कि पृथ्वी के नीचे से वोल्केनोज निकलते हैं, ठीक है, तो वो जाकर आप स्टडी करो. लेकिन मैं कहूंगा कि यार वो गर्म होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि शायद वो जब ठंडे हो जाएंगे तो जाके आप स्टडी कर सकते हो उसके बारे में. लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लावा निकल रहा है वोल्केनो में से, वो अर्थ की किस डेप्थ पे से निकल रहा है ये हमको नहीं पता है. यहाँ से निकल रहा है कि यहाँ से निकल रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, एक्चुअल लावा निकल कहाँ से रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट आ जाता है. क्योंकि हमको ये नहीं पता रहता है कि वो लावा निकल कहाँ से. वो भी एक सोर्स है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनिक एक्टिविटी को हमने डायरेक्ट सोर्सेस पर रखा है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसका एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलता है कि वो अर्थ के इंटीरियर कहाँ से वो निकला है. समझ होगा था. तो डायरेक्ट सोर्सेस में इतना ही था, तो हमको इनडायरेक्ट सोर्सेस पे जाना है. डायरेक्ट सोर्सेस गोल्ड माइंस मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका में. यहाँ पे हमने 4 किलोमीटर तक चले गए. ओके. पोलर सुपर डीप बोर होल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम था, ये आर्कटिक ओशन में ये प्रोजेक्ट हुआ था. ठीक है. यहाँ पे हम 12 किलोमीटर तक गए थे. ठीक है. लेकिन अर्थ का जो डेप्थ है वो कितना है, 6321 किलोमीटर. ये क्या है, हमारे अर्थ का डेप्थ. तो उसके आगे 12 किलोमीटर और 4 किलोमीटर क्या है. देखो यहाँ पे आप फिर से देखो, रैपिड टेम्परेचर राइज अप्रोक्स 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. अगर आप ये इसको 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप करोगे, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाए तो रफली 31 किलोमीटर आएगा. तो 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और एक्सट्रीम प्रेशर, प्रेशर के बारे में आपको बताया, कॉज इक्विपमेंट फेलियर एंड रॉक डिफॉर्मेशन मेकिंग डीप एक्सप्लोरेशन इम्पॉसिबल. ओके. फर्दर इनडायरेक्ट सोर्सेस, मैग्मा प्रोवाइड्स क्लूज. मैग्मा हमें बहुत सारे क्लूज देता है बट ओरिजिन डेप्थ इज अनसर्टेन. ओके. नाउ we will go to the indirect sources. Okay. I also told it pressure and temperature also came in indirect sources. Okay.
because we can calculate it physically. Sorry, not physically. Scientifically, we can calculate the pressure and temperature and know about the interior of the Earth, which part is solid, which part is liquid. Okay, ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड से ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से हमको पता चलता है मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको पता चलता है। अच्छा, मीटियोर्स मीटियोर्स हम मान के चलते हैं कि हमारा अर्थ भी पहले जब बना होगा तो ऐसे ही सारी चीजों से मिलकर बना होगा, तो इसको स्टडी करके हमको ये पता चलता है कि हमारा अर्थ कैसे बना। ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया ना कि जहां टेम्परेचर राइज करेगा वहां क्या हो जाएगा, हीट की वजह से मेल्ट होगा और वो लिक्विड हो जाएगा। जहां प्रेशर राइज करेगा वहां क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा और वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक, द स्टेट ऑफ अर्थ interior, solid versus liquid, is a constant battle between heat, melting, and pressure, solidifying. Understand? Temperature geothermal gradient tends to melt. Okay. Now we came to the indirect sources. One earthquake also comes in your indirect sources. Okay. Earthquake. Seismic waves came from seismic waves came from earthquake. Okay. So the point from where energy release is known as or hypocenter. Focus or hypocenter. From the point where energy release. Okay. Perpendicular to the focus is known as epicenter. Here, maximum earthquake we feel where at epicenter. Okay. Pressure release in waveform. Pressure release in waveform. The waves inside the interior of the earth is known as body waves, and the waves along the surface of the earth is known as surface waves. Okay. What is focus and hypocenter? Focus or for focus we also known as focus is also known as hypocenter. Okay. Focus is the point where energy release. Okay. What is epicenter? Epicenter is the directly proportional to the focus. Where is epicenter? Epicenter is at surface of the earth. Okay. What is body waves? Body waves, the energy release from focus is in form of waves, and the waves inside the interior of the earth is known as body waves. What is surface waves? The waves along the surface of the earth is known as surface waves. Okay. Now, body waves body waves is of two types. First is primary waves, also known as P waves. Primary waves, also known as P waves. And second is secondary waves. Second is secondary waves, also known as S waves. S waves, so not surface waves. Okay. Primary waves are the fastest waves. They can travel between all solid, liquid, and gas. Okay. Whereas secondary waves
are slower with in comparison with P waves. P waves क्या होती है? Secondary waves slower होती है. Okay. Second, they can only pass through. Secondary waves can only pass through solid, not liquid. Gas, not secondary waves are only pass through solids, not liquid or gas. Where secondary waves are missing, we conclude that जहाँ सेकेंडरी वेव्स नहीं होती है वहाँ मानते हैं कि वहाँ जो अर्थ का इंटीरियर है वो क्या है? लिक्विड. ओके. सरफेस वेव्स is mainly for destruction. Destruction. There are two types of surface waves. First, Rayleigh waves, Rayleigh waves, and second, Love waves. Love waves. Okay. So focus inside the interior of the earth where energy release. Point of origin inside the earth where energy release. Okay. Epicenter directly proportional to the surface of the earth from focus. Okay. Here highest earthquake. Um, here highest highest we calculate on the surface of the earth. Okay. Focus epicenter. What is earthquake? Sudden release of stored energy generating seismic waves. Okay. Seismic waves are of two types: body waves and surface waves. One second. Seismic seismic waves are seismic waves are of two types: body waves and surface waves. Body waves travel through the Earth's interior, travel along surface of the Earth. ठीक. Provide scientific information about internal structure. Body waves क्या करते हैं? हमको scientific information देते हैं किसका? Earth interior का. और surface waves क्या होते हैं? Interaction of body waves with surface rocks. ऐसे इनका origin होता है surface waves का. ओके. Surface waves मैंने आपको बताई commonly for destruction. Body waves are of two types: primary waves and secondary waves. एस वेव्स को आप सरफेस वेव्स मत समझ लीजिएगा. Okay. Now, body waves are also of two types: primary waves and secondary waves. What primary waves do? Primary waves are the fastest waves. Okay, and they their path is like longitudinal or compressional. Okay, like a spring. Okay, they can pass through solid, liquid, and gas. Okay, whereas secondary waves paths are like their path is transverse. Okay, their path is transverse, and they are slower than primary waves. They can pass only through solids, not liquid and gas. Okay. The blocks, the blockage of secondary waves helps us identify liquid layer inside the earth. जहाँ secondary waves नहीं होती वहाँ क्या होता है? लिक्विड होता है. ऐसा हम मानते हैं, ऐसा होता है. ये हमको अपनी साइंटिफिक स्टडी से पता चला. ओके. Surface waves mainly for destruction. Okay. How surface waves generated by interaction of body waves with surface rocks. Slower speed but high amplitude cause the most violent ground displacement and structural damage. If you need to know about this graph, we can know it with a little story. Okay. Suppose मान लीजिए कि भूकंप आया था रात में आपके घर पे. अगले दिन आपने अपने दोस्त को फोन किया, भाई तुम्हारे यहाँ पे भूकंप आया था. तो आपके दोस्त ने कहा यार पता नहीं, मैं तो सोया था, मेरे को नहीं पता चला. फिर उसके अगले दिन भी आपने अपने दोस्त को फोन किया कि आपने पूछा भाई भूकंप आया था क्या? तो आपके दोस्त ने कहा यार भूकंप तो आया था,
मैं नींद में था, उठ गया। अच्छा, उसके अगले दिन भी आपने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई तेरे यहाँ भी भूकंप आया था क्या? तो आपके दोस्त ने कहा यार अगर मैं नींद में सोया रहता और घर से बाहर नहीं निकलता तो शायद मैं सोया ही रह जाता। ठीक है, तो जो भूकंप का हमको झटका बिल्कुल महसूस नहीं हुआ उसको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। जिसका झटका हमको थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ उसको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और जो भूकंप मेजर डिस्ट्रक्शन का कारण होती है उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। सरफेस वेव्स ये डिस्ट्रक्शन का कारण होती है। ओके, अब को समरी दे देते हैं। समरी क्या था जो भी आज हमने पढ़ा। तो समरी we started with geography term. Geography described from two Latin words, first geo and second graphos. Geo means earth and graphos means study or description. Okay, geo means earth and graphos means study or description. So we can say that study of earth or description of earth is known as geography. No, but we can also say that systematic study of earth is known as geography. But this definition is incomplete. Why? Because we are the humans who make changes on earth day and every day. Okay, we do mining, drilling, very we make homes on we make hotels on mountains, many things we do with our nature. So that's why only the study of earth is not geography. Okay, systematic systematic study of earth, study of earth and how humans live, work and operate on earth. Or we can say that the interaction of environment with human beings is also known as geography. Okay, who is the father of geography? Eratosthenes is the father of Eratosthenes is the father of geography. He described geography as home of man. He is the student of Aristotle. Okay, four realms of geography. Four realms of geography. Four realms of geography. इसका मतलब ज्योग्राफी में हम किन प्रकार की बातें करेंगे, तो हम इन चार चीजों के ही अराउंड बातें करेंगे। पहला लैंड, लैंड एयर वाटर एंड लाइफ। इन चार चीजों के ही अराउंड हम लैंड एयर वाटर और लाइफ के ही अराउंड हमारी जो भी बातें होंगी ज्योग्राफी में इसी के अराउंड। ओके, लैंड एयर वाटर एंड दिस इज लैंड एयर water, where all three combine together. That's why there is life on earth. Here we consider it is life. If we have there are two branches of geography. If we have to someone say divide geography, so I said that in geography is the interaction of environment and human beings. So environment को हम कह सकते हैं physical geography, right? With human beings हम कह सकते हैं human geography. ठीक, physical geography is of four types. There are four branches of physical geography. First is geomorphology, geomorphology. Second is climatology, climatology. Third is oceanography, oceanography.
and fourth is biogeography. These are the four branches of physical geography. Okay. What is physical geography? Study of Earth in its natural state. This is physical geography. What is human geography? Study of interaction of environment and environment with human beings is human geography. Okay. How humans live, work, and operate on Earth. This is geography. We started with the chapter of interior of the Earth. Interior of Earth. Okay. So why study interior of Earth? Why? Why में हमने बताया था कि रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एक रीजन था, कहाँ पर ग्राउंड वाटर है, कहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स है, बाकी सारी चीजें, कहाँ गोल्ड है, ये सारी चीजें, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। और सेकंड क्या था रीजन? सेकंड रीजन क्या था? जियो फिजिकल फिनोमिना। जियो फिजिकल फिनोमिना। जियो फिजिकल फिनोमिना क्या होता है? अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी। ओके। हाउ हाउ कैन वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? सो इसके लिए मैंने बताया कि आपको सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, कुछ सोर्सेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उन सोर्सेज को हम मेजरली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे दो सोर्सेज रहेंगे, एक हमारा माइनिंग एंड ड्रिलिंग। माइनिंग एंड ड्रिलिंग, इसमें आपको दो एग्जांपल देखने को मिलेंगे। पहला साउथ अफ्रीका गोल्ड माइन, साउथ अफ्रीका गोल्ड माइन, और दूसरा आर्कटिक ओशन डीप बोर होल प्रोजेक्ट। ओके। यहाँ पे हम 4 किलोमीटर तक गए, यहाँ पे हम 12 किलोमीटर तक गए। केजीएफ में हम 3 किलोमीटर तक गए। केजीएफ कहाँ है? कर्नाटका, इंडिया। ओके। इनडायरेक्ट सोर्सेस में भी हमने मीटियोर, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मीटियोर्स के बारे में पढ़ा। मीटियोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हमने पढ़ा। ग्रेविटेशनल, इससे हमको पता चल सकता है कि कौन सी रिसोर्स कहाँ है। ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा। मीटियोर्स और ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, और कुछ बच रहा है? बताइए बताइए, और कुछ बच रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा। इससे हमको पता चलता है कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड है इनसाइड द। और एक हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव्स। अब थोड़ा सा सिस्मिक वेव्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पार्ट। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स किससे निकलती है? अर्थक्वेक से। Earthquake, what is the definition of earthquake? Sudden release of stored energy. Okay. Earthquake से क्या निकलती है? Seismic waves। Seismic waves में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला बॉडी वेव्स, दूसरा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स भी हमारी कितनी होती है? दो। एक होती है प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, और एक होती है सरफेस वेव्स, एस वेव्स। सॉरी, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव्स क्या होती है? फास्टेस्ट होती है, ये सॉलिड लिक्विड गैस की निकल जाती है। वही जो आपकी सेकेंडरी वेव्स होती है वो थोड़ी स्लोअर होती है, और ये सिर्फ सॉलिड से निकल सकती है, पास हो सकती है। ओके। जहाँ से ये एस वेव्स नहीं पास होती, वहाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम क्या मानते हैं? वो पोर्शन अर्थ का क्या होगा? लिक्विड होगा। ओके।
दूसरा सरफेस वेव्स, ये मेजरली इसका कारण होती है, डिस्ट्रक्शन का कारण होती है। ओके, सरफेस वेव मेजरली डिस्ट्रक्शन का कारण होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, रेले वेव्स और लव वेव्स। रेले वेव्स और लव वेव्स। सरफेस वेव्स ही हमारी दो प्रकार की यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, कौन कौन क्या कहेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंट्रिक। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, वेव्स के फॉर्म में। तो वेव्स को हम क्या करते हैं, सिस्मिक वेव्स। अच्छा, फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर पॉइंट हम क्या कहेंगे, फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर पॉइंट हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर। यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा सिस्मिक वेव्स हाई मैग्नीट्यूड में देखने को मिलता है। जो वेव्स अर्थ के इंटीरियर होती है उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी वेव्स। और जो वेव्स अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग होती है उनको क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे द एंड करेंगे। ओके, आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग को ये लेक्चर देखें थोड़ा सा कमेंट करें कि आपको कहीं अगर डाउट है तो उसके बारे में कमेंट करें। कमेंट करें किस लिए डाउट है, और अगर कहीं पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो इस चीज के बारे में कमेंट करें। आप एक काम करिएगा, आप ये लेक्चर पूरा बढ़िया से ध्यान से देखिएगा और लेक्चर खत्म होने के बाद अपना एक समरी नोट्स, वन पेजर समरी नोट्स आप बना लीजिएगा। ये समरी नोट्स आप कैसे बनाएंगे, आप लेक्चर देखते टाइम नोट्स नहीं बनाएंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करेंगे, आप अपने से जाएंगे और उन नोट्स को आप क्या करेंगे, वन बाई वन अपने से जाएंगे, आप कॉपी बंद करेंगे, एक A4 पेज ले लेंगे, पेन ले लेंगे, जो भी आपको समझ में आया है उसको नोट आउट कर लेंगे, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई है उसको फिर से आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको ये जो पीपीटी है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप पीपीटी से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।